सॉरेन कीरकेगार्ड की किताब स्टोरीज ऑन लाइफ्स वे की तीसरे सेक्शन का नाम है सम रिफ्लेक्शंस ऑन मैरिज इन आंसर टू ऑब्जेक्शंस बाय अ मैरिड मैन। हमने जिस तरह लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब बैंक्वेट एंड हुई और सारे जो गेस्ट्स हैं दे ऑल हेडेड फॉर होम इन द मॉर्निंग, दे वेंट फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, और उन्होंने एक वॉल्ड गार्डन देखा जिसके अंदर एक कपल था, एक मैरिड कपल, और वो दे वर enjoying their conversation and they looked very happy. They looked as if they were in love. They looked like a couple. And ये जो ग्रुप था, ये जो सारे गेस्ट थे, they looked upon them with mixed feelings. और इन्होंने रात को जो भी फिलोसोफाइजिंग की थी, जो भी अपनी इन्होंने फिलोसफीज थेरीज अबाउट लव अबाउट मैरिज पेश की थी खाना खाने के बाद, all of that seemed as if it had gone to waste. Because when they looked upon the couple, it seemed कि right, love can work sometimes, love often does work. इन गेस्ट्स में से कुछ का मानना है कि लव वॉज रिडिकुलस, कुछ का मानना है कि लव इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ का ये मानना है कि वुमेन देमसेल्व्स आर अ कॉन्ट्रडिक्शन. एंड लाइक जोहाना एज अ seducer who was well a seducer, some loved beauty itself. तो ये जो डिफरेंट theories इन्होंने पेश की हैं, all of that went to waste because when they saw the couple in silence, तो देर वॉज दिस टेंशन अमंग देम, और सबके दिमागों में कोई अजीब एक थॉट आ रही थी कि राइट, लव ऑफ्टन डज वर्क. इसी मोमेंट विक्टर जो है उसने रिकग्नाइज़ किया कि जिस कपल को वो देख रहे हैं उनमें से जज विलियम है वो इंसान, और उसके साथ उसकी वाइफ है. तो एज दीज गेस्ट्स लुक्ड अपॉन द कपल इन साइलेंस, विक्टर क्रेप्ट अप टू द वरांडा ऑफ द हाउस, और उसने जज विलियम का एक और मैन्यूस्क्रिप्ट उठा लिया या चोरी कर लिया. जज विलियम के जो प्राइवेट पेपर्स थे वो विक्टर ने आइदर और के सेकंड पार्ट में पब्लिश किए थे, और विक्टर कहता है बाकियों को कि इफ़ आई हैव पब्लिश्ड सम पेपर्स ऑफ जज विलियम आई माइट एज वेल पब्लिश द अदर्स. तो विक्टर जब ये मैन्यूस्क्रिप्ट, ये पेपर्स अपनी पॉकेट में डाल रहा होता है, इट इज़ लिफ्टेड फ्रॉम हिज पोजेशन बाय विलियम एफएम, जो नरेटर है इस टेल का और जो साइलेंट सिक्स्थ मेंबर था इन एट द ग्रुप इन द बैंक्वेट एट द लास्ट सेक्शन. अब विलियम एफएम इन पेपर्स को, इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पब्लिश करता है इस सेक्शन के अंदर बाय द नेम ऑफ सम रिफ्लेक्शंस ऑन मैरिज इन आंसर्स टू ऑब्जेक्शंस. ये जज विलियम ने लिखा है ये सेक्शन, और इट इज़ अबाउट मैरिज विच एज वी सेड अर्लियर इज़ टाइड टू द एथिकल, और ये एक कंप्लीट रेपिटेशन रिक्वायर करता है ऑफ कमिटमेंट टू द एथिकल. द जज सेज देयरफॉर प्रेज्ड बी मैरिज एंड प्रेज्ड बी एवरीवन हु स्पीक्स इन इट्स ऑनर. और वो इसको ट्रीट करता है एज द हाइस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स. वो कुछ ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करता है विच आर अपेरेंटली फ्रॉम द यंग मैन, द ऑथर एडिटर ऑफ आइदर और पार्ट 1. द जज सेज इन पैगनिज्म देयर वाज अ गॉड फॉर erotic love and none for marriage. In Christianity there is, if I may say so, a God for marriage and none for erotic love. Marriage is, namely, a higher expression for erotic love. Marriage I regard then as the telos, goal of individual life. It is the highest telos in such a way that anyone who evades it crosses out the whole of earthly life in one single stroke and retains only eternity and spiritual interests. A person's total ideality lies first and last in resolution. Any other ideality is a trifle. The state does not need to penalize bachelors. Life itself punishes the person who deserves to be punished. To be a married man is the most beautiful and meaningful task. The person who did not become married is an unfortunate whose life did not permit him that, or who never fell in love, or he is a suspicious character whom we eventually ought to take into custody. Marriage is the fullness of time. He who did not become a married man is always regarded as unhappy by others, or he is that also to himself. All falling in love is a wonder. The young man then dissolves love into loving the lovable. After all, he must choose. Poor fellow, that is an impossibility. In paganism, therefore, love was attributed to Eros. Since the resolution of marriage adds the ethical, that somewhat arc assignation to a deity thereby becomes in marriage a purely religious expression for once receiving the beloved from the hand of God. जज जो है वो मैरिज को एक नेसेसरी और एक सोल फुलफिलमेंट ऑफ एरोटिक लव की तरह देखता है, और वो उसके लिए बैचलरहुड एक बड़ी अबेरेंट चॉइस है, और यही चॉइस कीरकेगार्ड ने खुद भी ली थी अपनी लाइफ में. ही broke off his engagement with Regina Olsen. However, it is clear that the judge praises marriage to an inordinate degree, और वो इसको एक क्वाज़ी रिलीजन बना देता है मैरिज को.
पहले वो बात करता है अबाउट द एथिकल स्टेट ऑफ मैरिज बीइंग कॉट इन द रिलीजियस, लेकिन यहाँ पे वो इन दोनों को अलग से आइडेंटिफाई कर रहा है. उसकी रीजनिंग ये है, उसकी रीजनिंग बेस्ड है ऑन द पैराडाइम ऑफ एडम एंड ईव, क्योंकि एडम एंड ईव वर प्रोनाउंस्ड हस्बैंड एंड वाइफ बाय गॉड हिमसेल्फ. तो मैरिज मस्ट बी द हाइस्ट यूनियन फॉर मॉर्टल्स एंड दिस इज़ इन फैक्ट अ रिलीजियस यूनियन. फिर वो बात करता है अबाउट द वर्च्यूज़ ऑफ मदरहुड एंड एक्सटॉल्स बोथ मदरहुड एंड मैरिज. जज विलियम यहाँ पे एक बड़ी अनटेनेबल पोजीशन इख्तियार कर रहा है, लाइक ही इज़ प्रेजिंग मैरिज एज इफ इट इज़ द हाइस्ट टेलोस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. और जब वो रेजोल्यूशन और कमिटमेंट की बात कर रहा है, ही इज़ क्लोज टू कियरकेगार्ड्स ओन व्यू, क्योंकि कियरकेगार्ड मानता था कि उसके ज़माने के मर्द दे वर मोर रिफ्लेक्टिव दैन पैशनेट. और ये जो एथिकल स्टेट की नेचर है, इट इज़ दैट ऑफ कमिटमेंट, इट इज़ दैट ऑफ फेथ, एंड इट इज़ द जजेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एथिकल, और more accurately one part of the ethical, namely marriage, with the religious, which must be considered erroneous. He says, the resolution is a religious view of life constructed upon ethical presuppositions, a view of life that is supposed to pave the way, so to speak, for falling in love and to secure it against an external and eternal danger. इस डिस्कोर्स में जज विलियम कभी मैरिज को एग्जेम्पलीफाई कर रहा है इस हद तक कि ही merges that with the religious, and sometimes he differentiates between the two. He does that in these words. Yet, from the essentially religious point of view, it cannot be denied that it makes no difference whether or not a person has been married. Here, the religious opens the infinite abyss of the abstraction. The religious abstraction desires to belong to God alone. For this love, it is willing to refuse, renounce, sacrifice everything. From this love, it will not allow itself to be disturbed, diverted, captured by anything else. लेकिन फिर वो दोबारा आ जाता है to this intolerable confounding of the ethical and the religious in these words. If it is doubtful whether falling in love is from God, if falling in love does not even need to presuppose a religious view, marriage is unconditionally of religious origin. Thus the person who breaks it not only makes himself and those whom he loves totally miserable, but he places life in contradiction with itself. He places God in contradiction with himself. इस डिस्कोर्स के अंदर जज विलियम फॉर क्वाइट सम टाइम वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द एथिकल स्टेट ऑफ बीइंग विच इन्वॉल्व्स मैरिज एंड विद द रिलीजियस स्टेट ऑफ बीइंग विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व मैरिज. और वो उसका बेसिकली पॉइंट ये है कि द रिलीजियस समटाइम्स माइट रिक्वायर अ मैन टू मैरी, बट समटाइम्स इट मे नॉट रिक्वायर अ मैन टू मैरी, इन विच केस ये जो इंसान है, द रिलीजियस मैन, he would be diverted, his energies, his efforts would be diverted, जो कि better used होंगी अगर तो वो सारा अपना इश्क, अपना लव और अपनी energies खुदा पे फोकस करे, and he focuses on God as the object of his desire or his love rather than the person who he has married. As we all know, Kierkegaard काफ़ी against है system builders के, not just in the realm of the religious but also in the realm of marriage. वो कहता है, ordinarily, we speak only of a married man's unfaithfulness, but what is just as bad is a married man's lack of faith. Faith is all that is required, and faith compensates for everything. Just let understanding and sagacity and sophistication reckon, figure out, and describe how a married man ought to be. There is only one attribute that makes him lovable, and that is faith, absolute faith in marriage. Just let experience in life try to define exactly what is required of a married man's faithfulness. There is only one faithfulness, one honesty that is truly lovable and hides everything in itself, and that is the honesty toward God and his wife and his married estate in refusing to deny the miracle. यहाँ पे जज विलियम एक बड़ी डिफेंसिबल व्यू इख्तियार कर रहा है that marriage is from God, और इसमें से ये कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि मैरिज इतना सिग्निफिकेंट पार्ट है यूनिवर्सल का, दैट इज़ द एथिकल का, कि खुदा द एब्सोल्यूट will look upon a bachelor with indignation and disapproval, and that his plan will be frustrated. This was a general summary of this section in the book. In the next video, we'll talk about the next section, which is guilty or not guilty.